time. And it's that feeling that if you're feeling stuck, just let me know. I'll be there, Once we need an objective viewpoint to our life struggles, that's where yellow turquoise comes into picture. Or I, as a founder and as a person, come into picture and provide assistance to all the young hearts and dynamic minds out there. So that's how the whole idea of creating yellow turquoise came into picture after my 10 years of experience into this field and understanding where the loopholes are. I'm really happy to have it here with me. Mental health indeed is really very essential when we talk about positive health and healthy, well-being of our students, our teachers, right? And I'm sure that you might have some idea why it's called yellow turquoise. Okay, so this How is did a you arrive very at this name? this is a very inquisitive question. Rather, a lot of people have come to me with that same question, that why these two color names out there. Okay, Yes. to have a shallow answer to this, they are two of my favorite colors. I love yellow and turquoise. Whenever I see my room or my office, there's some tint of yellow and turquoise all around. Okay. Second, Wow. and much better reason for this is these are the two colors that actually holistically define our mental health and create it as well. Where yellow is related to our solar chakra, our solar plexus, that defines our professional strength, hope, rejuvenation, prosperity, and all of that energy, as the solar powerhouse. Turquoise, on the other hand, focuses on the throat chakra, which is communication. So, how well your personal and professional communication comes across to people is what yellow turquoise tries to balance. So, the aim is, if you balance these two equations in life, rest all falls in place. Rest all really defines itself the way it's supposed to be, because once you're feeling something and you're not able to speak it up, that's where the piling up happens for emotions, right? So if you do not have the right sort of communication, personal or professional, it becomes a limitation. It inhibits your growth. And when I talk about yellow as a solar plex, when your professional excellence or your professional insights or your professional endeavors are not in place, that's where a person tries to, have that low self confidence, has those self doubts. So all of that comes into picture. So fixing these two helps to fix so many other aspects. Wow, that's the beauty of the whole name. I feel so like it's so beautiful. It's so balanced. Looking Actually, looking towards yes. it, towards a balance. And I'm so It- happy that the talk here is also about emotional balance and how to Yes, move it forward. yes, yes, indeed. And these two colors, they are not much known, but they are so significant in our lives. Absolutely, absolutely. Whenever you see that bright yellow, even in a, even in marigold, even in a Yes, sunflower, it just gives you, it pauses you, it gives you that pause and tells you, oh, how beautiful hope can look. So you should yes. always have your hope full bucket with you, that everything is possible if you wish to have it. Very true. Like if I imagine yellow as something, that comes from sun. After every darkness, there is this sunlight that makes hopes possible in us. And Absolutely. turquoise, it comes from, I feel somewhere I attach it from water, Yes. that depth, that fluidity. Very beautifully named. Thank you so much, ma'am. Really I'm so loved it. happy that you appreciated this effort. Really I happy on really that. loved it. Thank Yes. Tisha writes, it's a ray of hope. Very true. Very true. Yes, because Yes. I think not just due to my professional perspective, but personally also I'm a person with energy and hope. So this resonates with me so much. Exactly. Very much reflective as well. It's so beautiful to have you here, like full of so much of energy. Thank you. And I'm just waiting for Principal Ma'am to join in. Once she joins in, then we'll start our program. Till then, Definitely. I understand that completely, and ma'am. yes,
So where it is situated? It is situated in South Delhi, in Jorbagh. Okay. Okay. Yes, in BK Dutt Colony. I take Mhm. offline sessions. This is exactly one of the rooms of my office where I'm sitting right now. Mhm. Right. So, yes, it is situated in South Delhi, offline Mhm. J23, Jorbagh, Okay. BK Dutt Colony. Beautiful. Very nice ideas, very creative, and actually very different from monotony. I Yes. really hate that. But I Usually, really love people, these things. when they want to have mental health, when they want to talk about mental health, they talk about ease, they talk about comfort. I am a person with that connect color. So I Mm-hmm. feel like when you're talking about the superficial things or the things, the umbrella things, let's talk Right. about the intense ones as well, that really define Yes. you, that make you come alive. Very true. And without defining those inner sides, it is impossible. Then it is superficial as well. Exactly, because then you're just working on the mirror, you're not exactly working on the reflection. Reflection. Very true. Very true. Um, I guess we can start our session. Ma'am will join in between then because we are already running out of time. Just a second, let me see. I'll give her a call again. Yes, yes, please do Yeah, that. yeah, yeah. Sure. I feel we can start the session and ma'am will join in between. I would request NSS volunteers to please notify me as soon as ma'am joins in. Okay? So let us begin this beautiful session. All Over right, to thank NSS. thank you so much, ma'am. Yes, over to NSS. Absolutely. Student volunteers. Yes. A very good evening, everyone. We welcome you all. The topic for today's webinar is Exam Emotion and Mind How to Strive a Balance. Organized by the NSS unit of Aditi Mahavidyalaya. I'm Shreya Baluja, NSS volunteer from BA program second year. And I am Kashish Gupta, NSS volunteer from BA program second year. Today, we have a program officer Dr. Mali D. Savaria and invited guest speaker Ms. Deepika Dahima of Yellow Turquoise and every NSS volunteer who has joined us today. We as college students are dealing with anxiety and pressure so much these days. It becomes really difficult to make a decision and choose the right path. Under the guidance of Ms. Deepika, we might make a better decision for our future and cope with day-to-day problems related to exams, career, and other similar stuff. We are here today for an interactive talk on exams, emotion, and mind, how to strive a balance. Over to you, Kashish. So let's begin the event and I would like Dr. Mali ma'am to opening for the opening remarks. Over to you ma'am. Thank you so much, Kashish. Uh, I guess there is some echo sound which is coming. Yes, please mute yourself. थैंक यू सो मच सो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ दीपिका जी का हम सबको ज्वाइन करने के लिए और हमारे
एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए इतना प्यार भरा वक्त निकालने के लिए. So I, Dr. Mali Devi Savaria, Program Officer of NSS Unit, Aditi Mahavidyalaya, wholeheartedly welcome you. We are great to have you in Aditi family. Our Aditi NSS is really doing lots of work in making, our students' lives better. और हमारे जितने प्रोग्राम्स रहे हैं सबकी चाहत एक ही है कि हम स्टूडेंट्स की वेलबींग की तरफ फोकस कर सके. और अभी जैसे हमारा टाइटल भी है एग्जाम्स इमोशंस. सो आई होप एवरीवन इज अवेयर कि 17th से हमारे फिजिकल मोड ऑफ प्रेजेंस इट हैज स्टार्टेड, कॉलेजेस हैव स्टार्टेड. So in that case, students are also worried कि अब जो एग्जाम होंगे वो भी ऑफलाइन मोड में होंगे और उनकी उनकी रियल परीक्षा जो है वो अब और शुरू होगी. सो ऐसे में वो थोड़ा सा काफी सारे मैसेजेस जो मैं देख पाती हूँ वो डिप्रेशन में भी हैं, एंजाइटी में भी हैं कि कैसे हम लोग कर पाएंगे. और देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ कोविड. सो दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड कि उनकी हेल्थ तो नहीं, उसका असर उनकी हेल्थ पर तो नहीं पड़ेगा. इसके अलावा जो इमोशंस हैं, अभी 2 साल से बिकॉज कॉलेजेस हमारे क्लोज थे, सो 2 साल से एक इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स में दीपिका हमें देखने को मिलता है. लाइक their studies constantly are getting interfered by their family pressures, Right. domestic work, okay, and they are getting constant assignments, digital meetings, so much pressure on mind. तो ऐसे में वो किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और वो कोपिंग मैकेनिज्म्स, वो स्ट्रेटेजीज शायद हम इस सेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो सब चीजें आपसे सीख पाएंगे. सो विद दिस note, with these objectives, I really welcome Deepika ji on board. She has so much of experience in this sector, and group therapy sessions, I have read a lot about her through her LinkedIn profile and the introduction which was sent by students. So I really love the way you are working with groups, especially groups of students, and you have more than 10 years of experience in that. So I'm sure our students are going to get a lot from this session. Over to Deepika ji. Thank you so much. Like, I'm out of words to say how much I'm feeling for you right now. That you've gone an extra mile and, and taken my work to all these beautiful students out here. I really wish this session makes that difference for them and instills them with that motivation to cross over whatever dilemmas they have, whatever they've been growing through, to have their best coming up, right? Okay, so a big hello to all the students here, all the young minds who've been, the center of concern for ma'am and me out here today, and for whom we've actually united to take this session here. Just, I've written something for you. I'll just read that poem out, okay? So it is about rowing oneself. As we row a boat, we all understand that, rowing is an art. When you row a boat, it takes a lot of effort and understanding of the waves, the tide, the weather around, right? So rowing oneself, that's the title of the poem that relates to each one of you out there. Rowing oneself. At times, we all feel stuck. And that's when this thought struck. Even in my life is an ocean of high tides and the low ones. What holds me back to not swim, rather succumb? My eyes may get wet as water touching the shores, but that's my choice to stay dipped or to roar. I decide to row my lifeboat amidst all the storms, as I believe not in the adverse currents, but in my insights and form. It's really hard and takes a lot to row against the waves. Maintaining our calm, skills, faith, and positivity secures our win. So, starting on this win win note for each one of us, I would really like to share this with each one of you that it's about your mental strength. Yes.
Any hardship, any challenge is not a challenge till your mind doesn't accept it as one. So, for any challenge to come out to you and challenge you, it is only possible when you perceive it as a threat or a challenge. Start perceiving things as opportunities rather than challenges. Changing perceptions to things matters. Whatever you choose to define you will start to affect you. That's where your emotions play a role. Our emotions are volatile. They do not have a definite channel. They make a channel each time they cross us. And that's where the game is. Whenever you feel an emotion, good or bad, whatever in your comfort zone that is, don't classify it, rather understand it, recognize it. It is the AOA approach where you accept it, own it, and address it. Okay. So once you know that what is this feeling, own it with the triggers, that what triggered this feeling to you. And then when you want to address it, you can ask for a professional help or an unbiased, non-judgmental help around. If you've got a friend who is non-judgmental, who's very good to you and has been that secret keeper, or who's been that faith instill person, you can share it with the person and ask for suggestions. But when you have to ask for guidance, it comes from your mentors or somebody who's more experienced, whom you trust, right? So one thing you need to understand, that emotions become a challenge when you perceive them as challenge. It's your perceptions that turn the world around for you, especially in terms of emotional balance, right? There could be a lot of reasons for family discord, personal indifferences, friends with, indifferences with friends, but that doesn't mean that everything will come to you. It's up to you what to choose to hit to you. If somebody throws a stone, you don't let it hurt you knowingly. You see it coming and you go left and right and you try and save yourself. Similarly, when you think that an emotion is coming to you and it is, you don't want to own it, you don't want to get into it, try the left and the right way. Try and find out a way to not really let it hit you. And if it does, then sit back, pause, don't run, don't panic. Sit back, pause, and understand what has hit you. And then find a relatable, reliable person to share it. It's for all the students as well as for the mentors, because this can happen to anyone at any stage of life. All right. This is how you proceed towards your emotional balance. This is how you recognize that there's an imbalance and you start to understand it deeper with insights, triggers, owning it, and then address it further, either to a friend, either to a person who's uh, a guidance giver to you. All right. Once you know what is the emotional dilemma that you're going through, once you know what are the triggers to the emotional dilemma, you've shared it with the friend that it's not helping, then you go towards a guidance giver and share it, and then you take professional help further. That's how you proceed with your emotions. Okay. Next, anxiety and exam stress. All right. So one thing that we need to understand about anxiety and stress is that it always comes from unorganized stuff. Once you're organized in your approach, you don't feel stressed about things. Yes, that's the key to it. So if you want to pull off anxiety, you want to pull off stress, you need to put the right key to the organization button. Okay, you need to understand that even if your studies were online, you had ample time to write your exam, you had that online mode of typing, but certain exams are because of your understanding and essence. It's not about what the book has, it's about how you interpret what the book has, right? And if you are organized enough, you know how it's going to come around, then it will not bother you. If you know that the exams are going to come around the corner, you can try and understand what are the loopholes, or what are the hardships, what are the chapters that you don't understand. Give it a shot for the group study.
try to find out ways to combat it. Don't find out reasons to understand it. Stress needs to be dissolved with solutions. It doesn't have to be evolved with excuses. Understanding this thing about stress and anxiety. किसी भी चीज की एंजाइटी होती है, उसके बारे में ज्यादा सोचने से वो एंजाइटी बढ़ती है. उसका ऑपोजिट सोचना है आपको, ऑल्टरनेटिव सोचना है आपको. अगर आपको आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, बंद कमरे में प्रॉब्लम है, तो आपको दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा और खिड़की ढूंढने के बारे में सोचना है. अगर आप चिल्लाने लगेंगे कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं और मेरा दम घुट रहा है, तो और घुटेगा, बिकॉज आपकी एनर्जी चिल्लाने में वेस्ट होगी उस वक्त. Right? Similar is the key, that if you feel that something is going out of your hands, try and understand how to organize it for you. It will take efforts. Listen, everything in the world take efforts. You coming on to this meeting, taking out time is taking efforts. Some students organizing this meeting along with the mentors have taken efforts. We get up in the morning, have our breakfast, it takes efforts. Chewing your meal takes efforts. So you can't do away with life with efforts. That's a basic funda that you all need to understand and share it with one another, because when you understand that you can't do away with efforts, it makes life faster. And it does make it simpler also, because it works on your willpower. Once you find out solutions, your willpower accelerates. If you find excuses, your willpower decreases, because then excuses give you chances to back out, whereas solutions give you motivation to stand up and make it happen. Okay? And once we know what emotions are we going through, what is that belt tightening time, or what is that rough patch we are going through, and we know the triggers about it, we are ready to share it. Also, one more thing, always make sure that you share it with a person who makes you feel uplifted. It's important to understand that that uplifting feeling of a person not judging you, of a person holding you, is a different feeling. Don't share it with everybody and anybody. And just a suggestion, it may sound offensive to some. Don't share it on your Instagram stories and Snapchat stories. That doesn't really help. It's not about fetching crowd. It's about fetching a connect. So if you are in trouble, somebody very, very close is going to solve it for you. Okay. So find that very close, trustworthy person whom you can pour your heart with, who can act as a container when you vent out your emotions, right? So that is more important in that regard. And with exam anxiety and stress, I can give you a stepwise routine to go about it. Anything you want to accomplish, have smaller, relatable goals to it. Make small goals come true for you, so that bigger games can be executed. When you have a goal to study 7 chapters, break it into a 1 chapter, then 2 chapters, then 3 chapters. Every week, have weekly goals. Do not have monthly goals. Have weekly goals and keep revising them. Have small, relatable goals for yourself. And credit yourself. Oh my God, I did half a chapter. I understood. I made notes out of it. Superb. Give yourself that credit and push that yes, you're doing it. It is important. If you don't credit yourself, you don't compliment yourself, your self-confidence comes down. Because you start to having your self-doubt. Probably I'm not so good at it. Oh, I can't do it. I don't think I'll make it happen. Oh. So all that really pats your back for all the self-doubt within you. It doesn't credit you to uplift you. It rather bogs you down. So realize what you can achieve in small quantities. Take out the subject that's more close to you, that you have an understanding with. Solve that first, because whatever you connect to, whatever you have understanding of, will yield better results any day. Okay.
Next, if we talk about how to have seeking information at the right time, uh, I feel that we all know what the right time is for us. Um, just a second. I would request, because there is a message in chat box. The student has returned to be bilingual, so that it's easy to understand for Hindi language students as well. Sure, So sure. yeah, Thank you so much for thank you, reading it out to me. thank you, Thank you. thank you. Okay, so once we talk about the fact that we all know what the right time is, जब हमें कोई चोट लगती है, चाहे वो दिल पे लगे या शरीर पे, हमें पता होता है कि हेल्प कैसे मांगनी है। प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां हम हेल्प को क्लासिफाई करने लगते हैं, जहां हम उसे जस्टिफाई करने लगते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, एनीथिंग यू फेसिंग, यू गोइंग थ्रू, you know it, you very intelligent beings, guys, you know it. only the point is आप उसे बताने में हिचकिचा जाते हैं। कई बार लोगों के पास वो इंसान नहीं होता जिससे शेयर किया जाए, और कई बार शेयरिंग के लिए बहुत सोचना पड़ता है, राइट? माय सजेशन एट दिस पॉइंट इज, आप सोचिए मत, get have a professional help for yourself. Okay, now you know me, but before you didn't know me, I was just about to say that ask for a good professional help to be an unbiased caller for you. One call in any reliable, relatable uh, organization that deals with mental well-being would really make it come through. If you're not wanting to get into a continuous process of therapy, that's okay. सबको पूरे पूरे प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। कई बार आपको सिर्फ सुनने की जरूरत होती है, आपको सुनने वाला चाहिए होता है। सो वो एक सुनने वाला ढूंढिए अपने लिए, अपने दोस्तों से पूछिए वो कहाँ वेंट आउट करते हैं, कैसे वेंट आउट करते हैं, और हाउ डू दे फाइंड देयर वेज। अंडरस्टैंड योर वे ऑफ वेंटिंग आउट, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी। शायद मेरे लिए एक दोस्त को फोन करना वेंट आउट हो सकता है, मेरे लिए मेरे थेरेपिस्ट को फोन करना वेंट आउट हो सकता है, मेरी टीचर को फोन करना वेंट आउट हो सकता है। तो आपका वेंटिंग आउट क्या है? वो आपको डिस्ट्रेस भी करेगा, आपको गाइडेंस भी देगा, आपको अपलिफ्ट भी करेगा, और आपको बहुत चीजों से बाहर भी निकालेगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ आई हैव टू डू अ सेल्फ डिस्क्लोजर हियर, I call up my mentor under whose esteemed guidance I had my Gargi College experience of psychology, where I studied psychology after my school. So I did my graduation from Gargi College, and my mentor has still been such a figure to me. Like, still I call her up and I tell her, ma'am, I'm stuck here. And she's like, oh my God, having that connect with your mentors is so important, that yes, I'm going to guide you through it out of my personal and professional experience, whatever your issue is. My issues have been personal also, they've been professional also. But I've always got that guidance from her. Okay. Sometimes you don't want to go up to your parents, you don't want to go up to your friends. Trust one mentor in your college, in anywhere you found that mentor, and make him or her your container. If the venting out is done fine, everything else falls into place. ओके, बिकॉज जब आपको वो सहारा मिल जाता है, वो साथ मिल जाता है जो आपको ऊपर उठाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। ऑल्सो ये समझना जरूरी है। Please unmute yourself. Please unmute yourself. या I द would पर्सन request इज all the, yeah. गुड। यस, एक और चीज, हम कई बार अपनी तकलीफों में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी इन द विक्टिम मोड। डोंट बी, राइट? आपको ये समझना होगा कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, आप किस ऊपर, आप गड्ढे में हैं, कोई ऊपर से जा रहा है सड़क पे, आप गड्ढे में कंफर्टेबली गाने गा रहे हैं, तो सामने वाला आप पे नजर नहीं उठाएगा, वो आपको उठाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसको लगेगा ओह, ये गिरा नहीं है, शायद अपनी मर्जी से नीचे है, एंड ही इज एंजॉयिंग इट, राइट? जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आस्क फॉर हेल्प। अगर मैं गिर गई हूं और मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई चलता हुआ भी
देखेगा कि मुझे हेल्प की जरूरत है और मेरा हाथ थाम के मुझे ऊपर खींचेगा। लेकिन अगर आप हाथ ऊपर करेंगे ही नहीं तो कोई आपको कैसे हेल्प करेगा? Asking for help is courage. It is not cowardness. It is not overthinking. It is not stigma. It is not myth. It is not superstition. It is simple your need to ask for help. And do not go to easy ways. It's that quote that I remember from one of those eminent readers, that it's the easy slides that are the most slippery. तो जब आप इजी वेज अडॉप्ट करते हैं ना कि ओ आई एम फीलिंग दिस, लेट मी पुट इट ऑन द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड, मेक 20 पीपल अंडरस्टैंड दैट आई एम फीलिंग लो, 20 लोगों को बताने की जगह एक वो इंसान ढूंढिए जो आपके लो को हाई में कन्वर्ट करे। हाई में कन्वर्ट ना करे तो कम से कम आपको आपके लो में होल्ड करे। You have to understand this. This is how mental health works. This is how emotional balance comes out. Because emotions don't need a balance, they create it for themselves. तराजू का एक पलड़ा अगर भारी है तो एक ऊपर होगा। वो हमारी चॉइस है कि किसको भारी करना और किसको ऊंचा। आपने एक में ओवरलोड करके ओवर थिंकिंग डाल दी, एंजाइटी डाल दिया, स्ट्रेस डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाएगा आपको लेकर और आपकी गुड सेल्फ ऊपर आएगी, वो हल्की हो जाएगी। तो आप अगर गलत चीजों को भारी करेंगे तो अंदर से हल्का महसूस करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे उस बैलेंस को बनाने की, थोड़ी तकलीफ होगी, एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा। सेल्फ वर्क इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस, बट होगा। दैट्स द ओनली थिंग दैट गारंटीज इट। किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ में ये गारंटी है, अगर आप एफर्ट डालेंगे तो रिटर्न मिलेगा। आप एफर्ट नहीं डालेंगे, that will create an issue, because that's how the mental health doesn't pay you. It doesn't pay on dreams, it pays on efforts. So you have to make sure that you're willing to make that effort for yourself. आप हाथ उठाएंगे तो कोई जरूर पकड़ लेगा। हाँ, वो बात अलग है, जिसने पकड़ा है वो आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट ले आएगा, फिर आप और चॉइस करके बेहतर लोगों के पास जाकर अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। बट आस्किंग फॉर हेल्प इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बैंडेज लगाते हैं, घर में आपके पास ऑइंटमेंट्स होते हैं कि अच्छा ये कट गया तो ये ऑइंटमेंट लगा लें। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके इमोशंस आपके ऑर्गन्स की तरह ही वर्क करते हैं। ओके जैसे नर्व्स में, वेन्स में ब्लॉकेजेस होती हैं तो हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। जब आपकी इमोशनल पाइलिंग होती है तो पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक आ जाता है। That's how it works. It's as complementary as your physical health. That's why it's very important that you take care of your body and you take care of your mind. You make your mind your absolute friend that listens to you, that processes it for you. Okay? Because when you don't talk to yourself, positive self talk is a very, very important part of your mental well being. It's not about looking into the mirror and talking sense. It's about looking to yourself and complimenting yourself for just being the way you are. You don't have to be the best. You don't have to be the worst. You just have to be yourself, the real self. You have to compliment yourself. You have to gift yourself that smile that you deserve for being the person you are. Trust me, I get up every day in the morning and the first thing I do is I I just close my eyes and visualize myself with my brightest smile. Brightest possible smile. Even if it meant I was in a party and I created a hue and cry about ha ha ha, but I do that and I visualize myself like that. I embrace happiness in the morning so that I can embrace it with 20 more people that I meet in a day. This is how positive self-talk begins. बातें सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती। कई बार जब आप अपने आप को चुपचाप बिना कुछ कहे विजुअलाइज करते हैं उस स्टेट में तो भी आ जाते हैं। हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर अपने लिए अच्छा नहीं बोलना होता। कई बार आंखें बंद करके
खुद को फील करके बोलना होता है, हाँ मैं ये बातें मुझ में अच्छी हैं, मैं इसे ग्रेसफुली भगवान की आशीर्वाद से इसको एम्ब्रेस करता हूँ, करती हूँ, एंड आई फील हैप्पी कि मुझ में ये क्वालिटीज हैं, और आज मैं 10 में से 2 क्वालिटीज को और आगे बढ़ाऊंगी। रोज आप अपनी 2 क्वालिटीज को भी पॉलिश करते हैं, एक को भी करते हैं, तो भी बहुत सारी क्वालिटीज पॉलिश होती हैं। एंड फील प्राउड ऑफ ओनिंग योरसेल्फ, डोंट फील स्मॉल और अशेम्ड ऑफ इट। इट्स नॉट अबाउट दैट, यू आर नॉट बोस्टिंग, आप बोस्ट नहीं कर रहे हैं कि ओ मैं अच्छा हूं, नहीं, सब में अच्छाइयां हैं, मैम में अच्छाइयां हैं, मुझ में अच्छाइयां हैं, आपके एनएसएस के इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है, उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचिए। सिमिलरली अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचिए, सब में सारी अच्छाइयां नहीं होती हैं। आई वॉज द वर्स्ट एट मैथमेटिक्स, मुझ में ये अच्छाई कभी नहीं थी कि मैं अच्छी कैलकुलेशंस करूं। I do not have it. I know it. That's my improvement area. I know it. But my positive is that I am confident and I'm communicative. Okay, rest follows. Because I'm confident and communicative, trust me, as a child in the school also, I've been able to solve many problems that I never even thought of. Because I was always willing to communicate to my teacher, to my friends, that listen, I'm going through this. I don't understand it. Please help me out with it. It's important. प्यास लगी है, या तो आप खुद जाके पानी लेंगे या पानी के लिए आवाज मारेंगे, लेकिन प्यासे बैठे रहना सोल्यूशन नहीं है। आपको दिल में दर्द है, आपको कोई बात बुरी लगी है, या तो उस इंसान तक चल के जाइए, बोलिए लिसन आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेट्स सॉल्व इट आउट, कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक्सप्रेस कर दीजिए कि लिसन आज कुछ हुआ जो ठीक नहीं था, हम कल बात कर लेंगे जब दोनों का मूड बेटर होगा। कोई रास्ता निकालिए। अगर उससे बात नहीं करनी है तो आप किसी तीसरे इंसान से उससे बात कीजिए जो बैक बाइटिंग ना करे, जो बात फैलाए ना, लेकिन ट्रस्ट वर्दीली आपको गाइड करे कि शायद तुमने ओवर रिएक्ट किया, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, थिंक अबाउट दिस एरिया ऑफ द होल कॉन्वर्जेशन, थिंक अबाउट दैट एरिया ऑफ द कॉन्वर्जेशन। ये चीजें करना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए नॉर्मल अपनी फिजिकल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, वैसे इमोशनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलरली वी मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारे इमोशंस ऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारा दिमाग चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाता है। कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेट्स फाइंड द पॉजिटिव मोमेंटोस टू इट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, you will enjoy gala time with your teachers and friends offline, which you've not been able to do for the past 2.5 years. Okay. Second, you'll be able to visit, explore places, your canteen area where you guys talk your heart out, your libraries, your reception area, your playground. Oh my god, the college vibe is a vibe in itself. आप मुंह लटका के भी कॉलेज जाओ, कॉलेज का ये सबसे बड़ा फायदा है, जाते ही हंसने लगते हो आप, यू एंटर द गेट एंड यू आर स्माइलिंग, एंड दैट इज वन थिंग दैट रियली वी ऑल नीड आफ्टर कोविड। बिकॉज घर में रहना बंद होकर हम सबको नहीं आता था, हमने सीख लिया, ठीक है। अब हमें वापस खुलना नहीं आ रहा है, वो सीखना पड़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको ऑब्वियसली वो प्रिकॉशंस लेने होंगे, मास्क, सैनिटाइजर, आप ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में, सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दोस लिटिल प्रिकॉशंस अराउंड यू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी को जीने का मजा आधा कर दें। जिंदगी का स्वाद लोगों के साथ होता है। अब एक प्लेट में आपके लिए डिनर सर्व हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, लेकिन आप अगर डाली ना चाहें तो वही वाली डालते हो जिसका स्वाद आपको पसंद हो। तो जिंदगी की प्लेट में वो सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जो आपकी जिंदगी को वो स्वाद दें, वो फ्लेवर दें, और वो एक्चुअली कोविड के बाद होना चाहिए। सो प्लीज बी वेरी वेरी हैप्पी टू गो बैक टू योर कॉलेज। रहा एग्जाम्स का सवाल, ओनली 3 थिंग्स वर्क विद एग्जाम्स: ए ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बी प्रैक्टिस, सी योर मेमोरी। Okay, once you're organized and you are practicing your syllabus on the time with all good efforts around you, doston se lo, teachers se lo, they're all always ready to help. Last is your memory of retaining what you need to write in what exam.
memory of timing yourself for the exam. नहीं किया है काफी टाइम से, बट दैट डजंट मीन कि आप में वो क्वालिटी नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे. 2 साल पहले तक आप सब यही कर रहे थे. ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है. वो सिर्फ 2 साल का पॉज आ गया तो हम सबको लग रहा है ओ माय गॉड दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स. रिमेंबर दोज डेज वेर यू वुड जस्ट गेट आउट ऑफ द हाउस कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, बस भाग के कॉलेज जाना है क्योंकि दोस्तों से मिलना है. इमेजिन वो खुशी. Uh, I would like to interrupt in between Deepika because our principal ma'am has joined us. और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये है कि मैम रोज कॉलेज जाती हैं for taking all the tasks. She has been going continuously during COVID as well to work. So उनसे हमें उस बात की inspiration लेनी चाहिए. And ma'am is there with us. So I would request ma'am also to please join us. Thank you, Dr. Mali, and welcome, Deepika. Ma'am, thank you so much, ma'am. We at Aditi Mahavidyalaya believe in the development of concept of resilience that is often used to describe students' ability to deal with the pressure and stress effectively. It is a life skill that educational institutions need to nurture. All the students will encounter adversity and barriers to learning only and only due to resilience, because only the resilient will overcome these, helping them to fulfill their potential. We are glad to share that Aditi Mahavidyalaya wishes to have this program as a student well-being campaign coordinated by Dr. Mali Devi Savaria in collaboration with Yellow Turquoise today. I welcome Ms. Deepika, and I want to put on record the efforts put in by Ms. Bhavna Pathak from Aditi Mahavidyalaya. Deepika ji is a counseling psychologist, life skill trainer, relationship coach, life story, and mindful coach, and an educator, and has a remarkable 10 years background providing therapeutic well-being and counseling clients, individual and group, from various fads of life ranging from 10 years to 70 years age under many clinical, social, and emotional caps. She then turned into add another feather to her cap by stepping into the field of education as school counseling head of many institutions, establishing teams for student progress, staff training, and parental guidance. Her passion for education and mental health, focusing on people's welfare, makes her a sterling personality. Welcome, Deepika, once again. I think our students would really be benefited by your um, voice of wisdom, etc. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Since you've opened this thought to resilience, and I was about to recite another poem on resilience for all of us here, because I actually was heading towards talking about resilience in terms of emotional balance. So here we go with ma'am, with Dr. Yes. Mali, we share another poem. Resilience, the spring of life. We have heard about it a lot, but have we thought about it enough? Probably we have tried reading about it, but have we tried working enough? It's not just a term for life, it's to reform a life. Life has various colors, so does seasons. This is to stand true to all your reasons. Dig deep inside you to find if that exists, twisting oneself hard to let it persist. I've heard many say women are born with it, but no one really sees myriad of reasons to not quit. So do not quit. That's not an option for people at Aditi Mahavidyalaya. That's what we all believe in. Why, ma'am? Am I right, Dr. Mali? Yes, of course. We never believe in giving up.
We always try. We always try. And that's the strength of souls at Aditi Mahavidyalaya. Absolutely. True. So, moving on, when we were talking about organization, we were talking about practicing our syllabi, and then we were talking about really making it happen with memorizing and retaining the useful information to be written in exams. Please do not take it as a challenge. Rather, take it as an opportunity for further growth and learning. Because until and unless open book exams are not the taste you would like to have in your life book, when you're away from your books, you've read the book and you try and deliver that essence on paper in an offline exam, it's so much better. ऐसा लगता है हाँ आप अपने व्यूज लिख रहे हैं, आपने जो लर्न किया, जो सुना, जो पढ़ा, वो आप अपने शब्दों में लिख के अपने मेंटर को दे रहे हैं, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. ओके, सो देखिए सिंपल बात है, जहां से मैंने शुरू किया था ये सेशन, कोई भी चीज चैलेंज तब तक नहीं बनेगी जब तक आप उसे मेंटली परसीव नहीं करेंगे एक चैलेंज होने के लिए. कोई भी चीज है, चाहे छोटी सी छोटी चीज आप अपने आसपास देखिए, वो चैलेंज तब बनती है जब हमें लगता है ओ हम ये नहीं कर पा रहे हैं. तो जब वो थॉट नहीं आएगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चैलेंज बनेगा ही नहीं. वो हमेशा अपॉर्चुनिटी टू अचीव एंड एक्सेल रहेगा. एंड दैट्स व्हाट विल डिफाइन यू ऑल and make you fly high with your freedom. Okay, so moving on to another part of our conversation today is having seeking an informed decision about careers. All right, I'll just give you a glimpse of how you can actually do your career planning or a mind map about your career. First thing first, you need to understand कि आपको कौन सा career चाहिए. तो आपके पास तीन options होने चाहिए. Option 1, Option 2, Option 3. एटलीस्ट तीन options होने चाहिए career के लिए. ठीक है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. प्लान ए सपोज साइकोलॉजी है, प्लान बी इंटीरियर डिजाइनिंग है, प्लान सी आर्किटेक्चर है. लेट्स टेक दीज थ्री अनोनिमस ऑप्शंस फॉर समवंस करियर. ओके, सो जब आपको ये पता है कि आपका प्लान ए साइकोलॉजी है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में कितने कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप 5 इन एवरी स्टेट यू शुड एम एट. ओके, make a word document, a table in which you will tabulate all this detail कि कितनी कट ऑफ है, कौन कौन से कॉलेजेस आपको एम करने हैं, और अगर आप मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो कौन सी फील्ड है साइकोलॉजी की, और जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है वो स्पेशलाइजेशन कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है. ठीक है, आप कितना ही गूगल रिसर्च कर लीजिए, आप जब तक पर्सनल रिसर्च करके उसको टैबुलेट करके नहीं लिखेंगे ऑप्शन वाइज, वो माइंड मैप नहीं बनाएंगे, क्लैरिटी अबाउट करियर्स नहीं आ पाएगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है लेकिन भूख लगी है, तो कम से कम मैगी बनाने का प्रोसेस आपको पता होता है, तो आप मैगी जाके बना के खाएंगे. आपको बहुत ज्यादा करियर प्लानिंग नहीं आती, लेकिन जो बेसिक करियर माइंड मैप है वो सिर्फ आप बना सकते हैं. जब आप करियर बनाने की इच्छा रखते हैं तो माइंड मैप बनाने की ताकत भी होनी चाहिए. ओके, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, राइट. सो टॉप 3 करियर्स फॉर योरसेल्फ, आपके एप्टीट्यूड, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, आपके पैशन के हिसाब से, स्पेशली आपके एप्टीट्यूड और पैशन के हिसाब से आप पहले 3 1 2 3 करके करियर चॉइसेस करते हैं, उनके कॉलेजेस को, उनकी स्पेशलाइजेशंस को एम करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं. उसके बाद आप उसकी कंपेटिटिव एग्जाम्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, कि इस फील्ड के लिए ये कंपेटिटिव एग्जाम जरूरी है, इसकी ये डेट है, इसके लिए ऐसे पढ़ना है. वो पूरा इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप किसी से अगर सजेशन या गाइडेंस लेते हैं तो आप उस क्लैरिटी के साथ गाइडेंस लेंगे. राइट, आई विल टेल यू अ पर्सनल केस. I got a career counseling session for a girl who was willing to pursue interior designing as one of her careers. So she came to me and she said, probably my family wants me to do something different because I have grades in some other subject, very good grades. So she told me कि एक option है interior designing, एक option है company secretary, और मुझे दोनों में से एक में career बनाना है.
सो मैंने कहा पहली चीज, क्या आप जानती हैं इंटीरियर डिजाइनिंग और कंपनी सेक्रेटरी के बीच का फर्क? एक एक करियर है जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप नई थीम्स लाते हैं, आप रिन्यू करते हैं, वो चीजें करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करते हैं. Whereas company secretary is a more structured job. It's a more, very structured and a very time tabulated job where you have to understand कि आप calculated risk लेंगे, आप इतनी investment as a company secretary आप ये suggest करेंगे, supervise करेंगे. So that's a very different nature of a job altogether. Also, I told her to research certain institutes about fashion designing and the cutoffs related to the institute, the syllabus of fashion designing, the curriculum designed for it, the subjects included in it. Okay, that's how it works. उन्होंने रिसर्च की, वो 2 हफ्ते बाद मेरे पास वापस आई, तो उन्होंने कहा आई थिंक मेरा रिसर्च के बाद मन बदल गया है, I don't want to opt for interior designing, I want to opt for company secretary. That's the job I'm more comfortable with. So the idea is not कि आपको क्या लुभा रहा है, the idea is आप किस चीज के लिए बने हैं. The idea is आप किस चीज को इतनी पैशनेटली परस्यू कर सकते हैं कि आप दिन में 15 घंटे या 12 घंटे आप वो कर पाए. 3 घंटे 4 घंटे तो कोई कुछ भी कर सकता है. Take my own example. When I was in my school years and I just came to my graduation first year, I wanted to be a choreographer because I had joined in Shamak Dawa classes. I had joined in Uma Sharma School of Dance and Music. I was completely into dance and music, and I used to do that for 3 hours a day, 4 hours a day. So I used to feel कि वही मेरा करियर है. बट जब मैं बैठ के मैंने ये माइंड मैप बनाया अपने लिए पहली बार अपने फादर के साथ बैठ के, देन आई रियलाइज कि मैं ये 15 घंटे नहीं कर सकती. अगर मुझे एज अ कोरियोग्राफर किसी को ट्रेन करना है, आई कांट ट्रेन पीपल टू डांस. दैट्स नॉट माय फोर्टे. आई लाइक डांस. दैट्स अ डिफरेंट थीम ऑल टुगेदर. So I can't do it for 12 hours a day. I'm sorry. That's where I realized that that was my hobby and not my passion. My passion slowly developed as psychology, जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था. 11th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाई बिकॉज सब्जेक्ट से प्यार हो गया था. एंड ट्रस्ट मी, माय टीचर वाज वेरी गुड, so I did it for my mentor. I said I'll have to be like my teacher. I have to wear a sari and teach. That was the only motivation for psychology. So in that naive thought in grade 11th and 12th in my life, I wanted to be a teacher, and that was the only motivation behind it. Dheere dheere dheere, when I started discovering, I was more passionate towards psychology, and that's where my career started to frame. And thankfully, I'm very very thankful that I discovered it then in my second year of grad, that my passion was something in psychology, that when COVID hit, I was working from 8 in the morning till 10 in the night with only 15 minutes break per session. I had death anxiety sessions, I had panic sessions, and all that you can think of, depression, marital discord, everything coming to my plate, and back to back sessions, not just India but abroad. So on the go, I have done those 15 hours of work. And today I say, yes, if you can practice something like this, then that's your career. You have to be motivated and passionate enough to do that. If you look around and see your teachers, they've not just worked and taken classes online, they've worked after classes so much. They've compiled reports, they've reported to their HODs, they've made those, online discussions that they used to have in their boardrooms. They've come for Zoom meetings department wise. They have made curricula, they have made question papers, they have checked question papers. Look at this work. It was not 6 hours of college, it was 12 to 15 hours of your teacher's efforts. We just heard that principal ma'am has been going to college ever, matlab all these months, every day she's been dedicated to her job. She's passionate about her career. She's passionate about
Aditi Mahavidyalaya and the progress the institution has to make under her. And that's the passion you need for your career. अगर आप में वो चीज किसी भी चीज के लिए है तो वो आपका करियर हो जाएगा, क्योंकि फिर आप फ्लॉलेसली एफर्टलेसली काम करेंगे. लाइक आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट आई एम फीलिंग वेरी जेलस विद मैम कि वो पूरे साल कॉलेज गई और हम घर में बंद थे. बट जोक्स अपार्ट, ये होती है मेहनत जो आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते इन अ करियर, उन्होंने पूरे कॉलेज के लिए की, आपकी हर टीचर ने आपके लिए की, आपने अपने दोस्तों के साथ की. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मेकिंग इन करियर्स. You have to understand making a mind map on career. So today, if any one of you has a career issue, just understand कि आपके 3 बड़े options passionately with your aptitude क्या है जो आप 12 घंटे कर सकते हैं. उसके बाद आप 3 चीजें देखिए, उन 3 चीजों के हिसाब से कॉलेजेस देखिए, स्पेशलाइजेशंस चूज कीजिए, उसमें कट ऑफ देखिए, उस कोर्स के सब्जेक्ट्स को देखिए, क्या वो आपकी स्ट्रेंथ है तो उसे परस्यू कीजिए. We can have another special option, we can have another special session for careers. I will be happy to do that, but this is how you move stepwise for your career making. Okay, I want you to do this research before we plan another session on careers, if we do, because this is how a normal career mind map works. This is how your growth in career is tabulated. You go to any career counselor, the person will ask you, what is the research done? You can't tell the person that I've just got up out of my bed, wanted to understand, so came to you. You need to have your own set of research in place before you opt for a career, because it's your career. आपका घर, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपकी नौकरी, आपका करियर, सब कुछ आपका है. एफर्ट आप करेंगे, साथ बहुत मिल जाता है. जब आप साथ ढूंढने जाते हैं तो बहुत साथ मिलता है. आपको टीचर्स का साथ मिलेगा, वो कुछ और सजेस्ट करेंगी, उनसे गाइडेंस मिलेगी, लेकिन आपको वो इनिशियल स्टेपिंग करनी पड़ेगी अपने लिए. ओके, दिस इज हाउ योर करियर फ्रेम्स. Any questions from anybody in the audience? Yes, I have got one question on YouTube Live. Yes, ma'am. काफी सारे स्टूडेंट्स ने लाइक जो एक्सप्रेस किया है, दे आर आस्किंग कि हमारे पास अभी जब हम एजुकेशन को एक्सेस करते हैं तो बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन एक साथ ओवरलोड होकर आती है. सो ऐसे में हम किस तरह से चूज करें और इन्फॉर्म चॉइसेस या इन्फॉर्म डिसीजंस लें, because there is so much of digital overload on them. Everything is online, every book, text, chapter, everything. So how do they select? What are the coping strategies for that? Okay, so first things first, thank you for the question, Dr. Mali. First thing, understand that you have the power to choose to create. Okay, understand that you have the power of choice. If you have 20 clothes in your wardrobe, आपकी अलमारी में 20 कपड़े टंगे हुए हैं, आपको पता होता है कि आज आपने ब्लैक नहीं पहनना, व्हाइट पहनना है, व्हाइट नहीं पहनना, रेड पहनना है, आपको पता होता है. यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू मेक अ चॉइस. ओके, सो जब बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है ना, तो सारी देखनी नहीं होती. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से कौन से वाले लिंक, कौन सी वाली बुक्स आपके लिए प्रेफरेबल होंगी. राइट, you have to understand that your intelligence is not underrated, it is overrated. We all understand that you're intelligent beings, so you have to prioritize your information. Right, if I have 20 sessions, I'll have to prioritize those sessions in the morning according to the fact that शायद किसी की एंजाइटी का इशू है तो उसको पहले लेंगे, किसी की सिर्फ एक what do you call it, okay, if somebody has a headache, it will be taken care of later, but if somebody is under stress and panic, it will be taken care of first. So when you have a lot of links coming to you, lot of books coming to you, understand what you wish to read to create a career of your choice, or you wish to read to understand
what is going through in your emotions right now. What resonates to you? Okay? What resonates to you the most is what you're supposed to pick. It's about your choice. And when you want to take a choice, ask yourself. You feel your gut. Ask yourself. You make the right decisions. It's important. Okay? Having that information to make a decision is a very big blessing. Many of people in our country cannot have that blessing because they're not educated. You have been you are educated, you are going to Aditi Mahavidyalaya, and you got a college where you got help around, you've got mentors, right? आई अंडरस्टैंड कि 2 साल घर पे बैठे बैठे सिर्फ फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी और वेब सीरीज देख देख के बहुत इंसान बदल जाता है. They start to understand things from a better perspective or from a bitter perspective. But the choice again remains with you. आज वेब सीरीज इतनी सारी हैं, आप चूज करके देखते हैं कौन सी आपके साथ रेजोनेट करती है. आपको पता होता है ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद. ये ना बहुत ये वायलेंस वाली है, ये मुझे नहीं पसंद. आई वांट टू वॉच अ कॉमेडी, आई लाइक दैट, राइट? सो यू नो व्हाट यू वांट टू वॉच. सो जब वहां आप अपनी चॉइस को ट्रस्ट करते हैं, सो डिजिटलाइजेशन में भी अपनी चॉइस को ट्रस्ट कीजिए. गो टू दोज ई बुक्स दैट रेजोनेट विद यू. Go to those links that are fruitful. Okay? Make those things your priority. Understand what makes you happy, what brings the joy in you come alive, and that's what you're supposed to prioritize. Okay? Always, one of the biggest coping strategies is having your physical health in place. So always make time to exercise, because we all have food the entire day, right? But what happens is, when we're eating food and we're not exercising, the energy that that food generates in the body is futile. It's not processed, and that hits to hit you. तभी आपको एंजाइटी होने लगती है, तभी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं. ये सब तब होता है. तो आधा घंटा सही, लेकिन अपनी सेहत के लिए वो आधा घंटा जरूर निकालिए. वॉक कीजिए, स्किपिंग कीजिए, टेरेस पे जाके आप योग कीजिए. आपको जो अच्छा लगता है फिजिकली आपको फिट रखने के लिए आप वो कीजिए, लेकिन वो आधा घंटा सेल्फ लव की डोज अपने आप को जरूर दीजिए. Please take out that half an hour where you make yourself feel loved and respected for existing the way you are. That's important. Do I have any other Yes, questions from the yes, audience? yes, Yes. yes, yes. I guess Tisha wishes to say something. Tisha, over to you. Please unmute yourself and speak. Good evening, ma'am. Good Am I evening, audible? Prisha. Yes, you're absolutely audible. मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि आपने कहा कि कोविड टाइम्स में आपके 15-15 आवर्स के सेशन थे एंड बैक टू बैक थे, तो आपने भी ओवरलोडेड फील किया होगा, स्ट्रेस्ड फील किया होगा, एंड आपका भी मन किया होगा नहीं अब मेरी बस हो गई है. तो आपने वो कैसे टैकल किया? क्योंकि अभी भी जैसे हमें असाइनमेंट मिलते हैं बैक टू बैक, हम भी थक जाते हैं और हम भी ओवरलोडेड फील करते हैं, तो हमारी भी बस हो जाती है एक पॉइंट पे, तो वो कैसे टैकल करें हम? So sweet, Prisha. That's a very sweet thing. अगर मैं अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो आई एम श्योर आज सब के सब मुझ पे बहुत सारा हंसेंगे और उसके बाद मुझे कभी यहाँ नहीं बुलाएंगे. लेकिन फिर भी मैं रिस्क लूंगी तुम्हारे लिए, प्रिशा. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. Okay. So since you've asked me this question, I'll answer it as brutally being honest to myself. First thing, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद the first thing I do is meditation. I have certain music that's very favorite to me, that calms me down, rejuvenates me. So I will really suggest कि आप सब लोग एक वो धुन रखिए. कोई फ्लूट की धुन है, कोई सितार की धुन है, कोई अरेबिक धुन है, मतलब whatever suits you to cool you down. Have that tune with you, that instrumental music with you.
आप सुबह उठें और सिर्फ आंखें बंद करके उस म्यूजिक को सुने और उसको रिलैक्स करने दें अपने आप को. I meditate with certain sounds and affirmations since my graduation. So I will say that that has been one of the biggest stress busters. I get up. मैं बहुत आलसी हूँ इसलिए मैं सुबह उठ के बिल्कुल बेड से नीचे कदम नहीं रखती हूँ. ठंड भी लग रही होती है, ऑब्वियसली इतने दिन से इतनी ठंड थी. सो बस उठी, शॉल ओढ़ा, एयरपॉड्स लगाए और बैठ गई. फॉर हाफ एन आवर, for 45 minutes I do that every morning. So I take that very religiously because I know मैं वो नहीं करूंगी. तो हर इंसान के पास अपना पर्सनल बैगेज होता है. एज अ प्रोफेशनल आई एम डिफरेंट, personally I am different. So when I sit on this chair having my professional sessions, I need to put my personal self in a box and I don't have to understand that. So for that I have to have my meditation in place. I have to have my self love, I would call it rather, in place. I do that every morning, Prisha, to keep myself grounded and anchored. Okay. हमेशा ये याद रखिए, टाइटैनिक हो या कोई भी इतना बड़ा जहाज हो, उसका एंकर एक ही होता है. ठीक है, उसका एंकर एक ही होता है. उस एक ही एंकर को आप शिप से नीचे फेंकते हैं कि वो एकदम सी बेड में जाके स्ट्राइक करे और आपकी शिप को सारे तूफानों के बीच भी सेफ रखे. अपने एंकर को ढूंढिए. मेरी मॉर्निंग ट्यून्स मेरा एंकर है, डेफिनेटली है. जब आपको आपका एंकर मिल जाता है तो आपकी रूट्स मजबूत हो जाती हैं. यू फील मोर क्लोज टू योर सेल्फ, राइट? आई फील क्लोज टू माई सेल्फ, सो आई रिमेन हैप्पी. So first I do that. Second, I've been a yoga practitioner for so many years now. Okay. So it's been donkey's years. I'm too old to practice yoga. It's been years that I've been practicing. I got introduced to yoga in my school days, where my sports teacher used to do yoga with all of us. And I think that's been one of my favorite things. So after 45 minutes of meditation, I do 1 hour of yoga in my room only when it's cold. When it's not, then I move out to my garden outside and I do it. अब मुझे बहुत खुशी है कि समर आ रही है तो मैं बाहर जा सकती हूँ सुबह. इतनी ठंड थी, ओ माय गॉड. सो सुबह मेरा सेल्फ लव, मेरी ट्यून्स और मेरा योग, वो जो सुबह के 2 घंटे में अपने साथ बिताती हूँ ना, तो मुझे अगले 20 घंटों के लिए चार्ज कर देते हैं. तो जब मैं 15 घंटे काम करती थी, मैं आई यूज्ड टू बी जस्ट सो हैप्पी. ओके, ऑल राइट. इसके बारे में मेरे पास, मैं टाइम करती हूँ अपने आप को प्रिशा. सो मैं सिर्फ दिन में 1.5 घंटा है जहाँ पे मैं सोशल मीडिया के साथ हूँ. मैं अपने येलो टर्कोइज के इंस्टाग्राम हैंडल को, अपने पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल को, लिंक्डइन हैंडल को, सारे हैंडल्स को कुल मिला के 1.5 घंटा टाइम देती हूँ दिन में, जहाँ मैं पोस्ट करूँ, रीपोस्ट करूँ, पढ़ूँ, असेस करूँ, एनालाइज करूँ. 1.5 घंटे में पूरा काम पूरा. और मैं 9:30 आई स्लीप ऑफ. My phone is off at 9:30. I get up at 5 in the morning. When I get up for the first 2 hours, I am not with my phone. मैं फोन 7, 7:30 के बाद देखती हूँ, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट सारी 9:30 से शुरू होती है मेरी क्लिनिक में, 9:30, 10. तो 7:30 के बाद मैं फोन देखती हूँ. जितना आप फोन को मास्टर नहीं बनाएंगे, रादर उसके मास्टर रहेंगे, उतना आप खुश रहेंगे हमेशा. बिकॉज I understand technology is important, but technology is not eminent. It's important, it's not eminent. It's not inevitable. Inevitable है अपनों का प्यार, inevitable है आपकी हेल्थ, inevitable है कि आपकी आंखें लाल हो गई हैं फोन पे लेकिन फोन नहीं छूट रहा. That's addiction, that's bad. Okay. So कुछ चीजें इनएविटेबल है. आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते, हंसे बिना नहीं रह सकते, प्यार लिए दिए बिना नहीं रह सकते. लेकिन आप फोन को एक्चुअली पर्पसली सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए दो घंटे अपने आप से दूर रखिए. यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड योर लाइफ कैन बी. ओके, सो दैट्स हाउ आई मैनेज माय regime, Prisha. Uh, Deepika, because you just talked about a very, interesting thing, and this is a problem, this is a concern which I can also see in my students as well. So the next question comes from my side and my students, because I have observed them that most of them are unable to sleep at night. ओके, दे आर टेलिंग मी दैट मैम फोन को भी साइड में रख के रात को नींद हमारी जो है वो नहीं हम पूरी कर पा रहे हैं. यस, भावना हैज आल्सो सेड समथिंग. भावना, वुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक? इट वुड बी इजियर.
मैम कितनी बार ना हम ना बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी ना हमको रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर हम ना बहुत होपलेस हो जाते हैं कि अब नहीं हो रहा, बस छोड़ देते हैं और थोड़ा डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन भावना। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए आप हार्डवर्क एक सधी हुई तरीके से करें। देखो, अगर एक पूरा इतना बड़ा गार्डन होगा, उसको रोज आपको पानी देना है, तो वक्त लगेगा उसको पूरा गार्डन एज अ गार्डन डेवलप करने में, क्योंकि आप पूरी जमीन को रोज पानी देते हैं। तो अगर मैं आपको एक गमला दूं कंपैरेटिवली और कहूं कि ये गमला है, ये नया पौधा है, भावना इसको रोज पानी देना है, इस गमले को टाइम टू टाइम, और इसको धूप में रखना, सिर्फ ये गमला तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम ज्यादा उस पे एफर्ट डाल के उसके एफर्ट्स को फ्रूटफुल बना सकती हो। अपने एफर्ट्स को भावना कैटेगराइज करो, ठीक है? हर जगह एफर्ट मत डालो। ये सोचो ये पहली 3 चीजें मेरी प्रायोरिटी है, मैं इन पे मैं 20% एफर्ट डालूंगी, किसी पे 5%, किसी पे 10%। ओके, ये चार्ट तुम्हारा तुम्हारी प्रायोरिटीज के हिसाब से होगा, और इसी वजह से हम अपनी एनर्जीज को सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं, वरना वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, आपको पता है, अच्छा मेरे असाइनमेंट्स मेरी 30% अटेंशन डिजर्व करते हैं, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर मेरी 20% एनर्जी डिजर्व करते हैं, 50% मेरी सेल्फ स्टडी है जिसकी वजह से मैं एग्जाम लिखूंगी। दैट्स योर वे ऑफ पुटिंग इट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ओके, तो आप उस तरह से अपने आप को रेगुलेट कीजिए, तो आपके हार्ड वर्क आपको बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे। आपके एफर्ट ज्यादा नहीं होंगे, रिजल्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी एक फैक्टर है भावना हर चीज में। आपने आज किया फिर 10 दिन नहीं किया, वो चीज वर्क नहीं करती। आप आज करेंगे और अगले 20 दिन रेगुलरली करेंगे, वो चीज वर्क करती है। दैट्स हाउ ओके इट मैम, थैंक वर्क्स। यू। That's so true. And most of the students when they tell me that, ma'am, we are working hard, लेकिन फिर भी हमें वो रात को नींद नहीं आ रही है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि कुछ नया तो नहीं आया है फोन पे, या अगर फोन भी नहीं है तो लाइफ से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है. सो हाउ कैन वी टीचर्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन दैट? ओह सुपर डॉक्टर माली। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ से अभी इमीडिएट अगले 2 महीने में क्या चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही मैंने अपने करियर को डेवलप किया जब मुझे नहीं पता था कि मुझे करियर बनाना है और वो बनेगा कैसे। ठीक है, मैं हर महीने के गोल लिखती थी, इस महीने में मुझे ये 4 गोल पूरे करने हैं, उन 4 गोल्स को पूरा करने का तरीका भी लिखती थी। ठीक है, और उस पर चलती थी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ये पता होना कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से क्या चाहिए। लाइफ से क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, खुद से क्या चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता था मुझे ये एग्जाम क्रॉस करना है, ठीक है, मुझे नेट का एग्जाम पास करना है, मैंने किया। लेकिन मैंने नेट का एग्जाम पास करने के लिए अपनी मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ी थी, मैंने नेट का एग्जाम पास करने के लिए अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, मैंने उसको प्रिपेयर करने के लिए ऐसा नहीं था कि मैं पूरी पूरी रात फोन और टैबलेट और लैपटॉप पे प्रैक्टिस करती थी। नहीं, अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं बस पढ़ रही हूँ, उसमें मैं कुछ और नहीं देखती थी। 2 घंटे मेरे पास मेरा फोन नहीं होता था, सिर्फ लैपटॉप और किताब होती थी कि मुझे सिर्फ पढ़ाई वाली चीज करनी है। फिर वो 1 घंटा मुझे वॉक करना है, 2 घंटा मुझे डांस करना है, 1 घंटा मुझे सोशल मीडिया को देना है। आई हैव ऑलवेज डन दैट एंड दैट्स हाउ यू डू इट। और रहा सवाल नींद ना आने का, जब आप बहुत थके होते हैं ना तो आपको एकदम लेटते ही नींद आ जाती है, तो शायद आपने अपने दिल और दिमाग के उस कोऑर्डिनेशन को एग्जैक्टली एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं। एक होती है फिजिकल एक्सरसाइज, एक होती है मेंटल एक्सरसाइज। दोनों में जब कमी होती है ना तो नींद नहीं आती। आप खाना खाते हैं सारा दिन, आप चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तो नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो एनर्जी जो आपका खाना बना रहा है वो बॉडी में अनयूज्ड एनर्जी पड़ी हुई है, तो वो सोने नहीं देगी आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास कुछ पाइल्ड अप इमोशंस हैं जो आपने एक्सप्रेस नहीं किए हैं, तो वो सोने नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो दिमाग में वो इमोशन चलता रहेगा।
आज उसने मुझे ये बोला, उसने उससे को ऐसे रिएक्ट किया, उसने मेरी साइड नहीं ली, उसने मेरी भी बात नहीं सुनी, ये लोग ठीक नहीं है। वो चीज एक बार रिपीट होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, वो चलती रहेगी। इसलिए जब कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब रिजॉल्व नहीं होता तो उसके बारे में एट द बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। दैट्स वेयर यू कांट स्लीप, बिकॉज आपकी लाइफ का मीनिंग सिर्फ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को शक्कर पसंद है कॉफी में, किसी को नहीं है, कितनी नहीं है, वो आपकी चॉइस है, प्रेफरेंस है। आपकी प्रेफरेंस क्या है ये आपको देखना है और उस Very पर चलना है। जी Very मैम। true, very true, very true. We'll take one more last question and Sure. post that we'll move towards, because मैं जानती हूँ काफी वक्त हो गया आपको और आपने like you have explained everything so categorically, so much in detail, and it was really a learning. But there is one more question which I want you to take it up from Harshita. जी, Harshita, can you unmute yourself? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग हर्षिता। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? Ma'am, I am also good. मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जैसे मेरे को ना बेकिंग में इंटरेस्ट है, जी। और मैं जैसे आपने कहा कि आप 15 आवर्स उसको दे सकते हो, तो आप वो सिलेक्ट करो, नहीं तो अपने 3 पैशन को अंडरलाइन करो कि कौन सा आप कर सकते हो। जी। तो मैंने बेकिंग में मैं कर सकती हूँ, मैं पूरी मेहनत कर सकती हूँ, मैं करती भी हूँ। बट मैम एक पेरेंट्स का और एक उनके बच्चों का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है बीच में, कि उनसे कैसे कन्वे कर सके, कि उनको कैसे समझा सके कि हम इसमें कर सकते हैं या कुछ बन सकते हैं। तो ओके। वो चीज में डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं या टीचर से कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट पेरेंट्स के साथ वो हमें नहीं समझ पाते, तो उसके लिए कैसे हम कर सकते हैं। Okay, a very good question. I think many people can face this in with their career discussions with their parents. पहली चीज हर्षिता, जब आपको लगता है आप बेकिंग एज अ करियर ले सकती हैं, आप पूरी कॉन्फिडेंट हैं उस चीज के लिए, तो मैं कहूंगी उसको एक कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये एक बहुत अपबीट करियर है, इट्स कमिंग अप, इट्स कमिंग अप, राइट। जैसे साइकोलॉजी इन 3 सालों में ज्यादा ब्राइट आया है एज अ करियर, वैसे ही बेकिंग एज अ करियर इज कमिंग अप वेरी वेल। ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स को कैसे कम्युनिकेट करना है? पहला तरीका, टेस्टी टेस्टी केक घर पे बना के उन्हें खिलाओ, उन्हें पेट पूजा करा के उनको कन्विंस कर दो कि देखो मैंने इतना अच्छा केक बनाया है, सोचो अगर ये केक मैं दुकान पे रखूंगी तो कितने लोग आएंगे खाने। सो यू हैव टू गिव देम दैट social and food motivation, that if you can enjoy eating it, others will also enjoy eating it and they will tell me to bake cakes for them. ठीक है, सो एक तो वो इंसेंटिव दे सकते हैं आप उनको, थोड़ा सा बहलाना फुसलाना एंड ये बताना कि देखिए मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, हर एक इंसान केक बेक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ केक बेक करने में, राइट। सो जब मैं केक बेक करने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं उसे एज अ करियर लेना चाहती हूँ, सो यू हैव टू कन्वे टू योर पेरेंट्स दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेकेंड, आप अपनी एक टीचर को जिससे आपने बात की हो उससे बात करा दीजिए कि मैम आप प्लीज मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच का ये जो ब्रिज है उसको आप बिल्ड कीजिए, ब्रिजिंग दैट गैप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। क्योंकि कोई भी टीचर जो आपको जानती हैं और आपके पैशन को जानती हैं, वो शायद आपके मदर फादर को थोड़ी और एक एक्स्ट्रा माइल जाकर कन्विंस कर पाएंगी कि आपकी बिटिया का ये टैलेंट एक्चुअली टैलेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके लिए इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि वो नहीं समझ पाते कि एक इनसिक्योर करियर को वो कितना सपोर्ट करें और कितना ना करें। ठीक है, क्योंकि टीचर होना, गवर्नमेंट जॉब होना, ये एक सिक्योर करियर्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर उठ के एक बेकिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मॉडलिंग, फैशन, इन सब चीजों को एज अ करियर देखना थोड़ा टफ हो जाता है नॉर्मली। सो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप उनको कन्विंस कर सकती हैं। अगर कोई तरीका वर्क ना करे तो मुझे मिला देना, आई एम देयर। थैंक यू मैम। Very true. I hope, Harshita, you have got your answer.
I hope that too. Beautifully. Yes, ma'am. Got it. Yes. That's so beautiful. Now, because that was the last question, और मैं जानती हूँ, this is not the end of our journey. It is going to take another shape, another form very soon. And with this, I would like to invite NSS AMV Kashish to go on further. Not Kashish, me, Shreya. Okay, Shreya. Yes, ma'am. I would like to thank our distinguished speaker, Ms. Deepika Dahima, for making an excellent input and making this webinar inspiring and motivating us towards making the right decision and never giving up. Also, thanks to all the participants for attending the webinar. Now, I would like to invite NSS volunteer Kirti Tomar for vote of thanks. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. I'm Kriti Tomar, NSS volunteer from BLED first year. A very beautiful evening to our principal, Professor Mamta Sharma, ma'am, and valued chief guest, Ms. Deepika Dahima, ma'am, a counseling psychologist and founder of Yellow Turquoise, and everyone gathered here. I have the privilege of thanking and acknowledging the contribution of those who worked really hard to make this session happen. Respected Chief Guest, your word really inspired us, and I'm sure that it will help students to gear up their knowledge. And, ma'am, thank you so much for taking out time from your busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much. I would also like to thank our principal, Professor Mamta Sharma, ma'am, for giving permission to organize this webinar, and our beloved Professor Dr. Mali Devi Savaria, ma'am, for their guidance and moral support. Also, thanks to all the volunteers present here for paying your attention and learning. Thank you so much, everyone. Thanks a lot, Kirti. And Deepika, I would like to say, I still remember that poem by Maya Angelou when I am watching you here with us, and you have joined our Aditi NSS family. And it's such a pleasure. Like, ऐसा लगा ही नहीं कि you are somebody who is maybe due to the age, because you are your age group, you can understand the issues of students so in layers so nicely, so that insight is there. And I would like to grace, and I would like to thank I would like to thank you with a poem, Still I Rise. Okay, so you may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I'll rise. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, bowed head, lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I have got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Out of my hurts of history's shame, I rise. I am a black ocean, leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise, I rise, I rise. That's what you are, Deepika. Very glad to have you with us. Full of gratitude and love for you, ma'am. Actually, I'm feeling so much. It's just a feeling that I can't express, but I'm in deep gratitude for your splendid words. It resonates with me so much. Thank you for Yes. choosing these words for me, and that's such a beautiful, lovely gesture from your side, Dr. Mali. I'll always remember this. You have my heart for this. Thank you so much. And I'm sure in this journey, we all are going long, and we'll all have your graceful presence, benign presence, time and again. I You'll would guide us. love to. Would love to make conversations, love to listen to sharings from those young minds. And if anybody wish to connect to me, you have my Instagram handle in place, the yellow turquoise.
Please, you can pour me with all your questions. That's fine. That would be so great. So great. Thank you so much, Deepika, for joining us. Now, a formal goodbye, but not informally, we all are together and we'll all be in Absolutely. future as well. With Yes. these words, we'll close this session and we'll have Deepika soon again. Yes, definitely would look forward, and all my love and regards to ma'am and the entire team of Aditi Mahavidyalaya, the NSS team, all lovely mentors like Dr. Mali. All my love and regards to each one of you out there. Thank you for bestowing me with this opportunity to connect to you all today. It was lovely. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. I would request all the NSS volunteers, please don't forget to fill the feedback form